बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस और लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी चैप्टर वाइज। तो स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लाइन वाइज सबको सुनना है। कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं करना। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पहले हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ अ मास स्पेक्ट्रोमीटर एंड मोनो आइसोटोप एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एवरेज एटॉमिक मास एंड गिव एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मोलर वॉल्यूम एंड एवोगाड्रोस नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द स्टोइचियोमेट्री, राइट इट्स असम्पशंस। इसके साथ आपने असम्पशंस लिखने हैं स्टोइचियोमेट्री के। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड। इसमें आपने डिफरेंस बताना है थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड में। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। Question number 8, 23 gram of sodium and 238 gram of uranium have equal number of the atoms in it. Question number 9 है, students, magnesium atom is twice heavier than the carbon atom. Why? इसमें आपने reason लिखनी है। Question number 10, calculate the mass in grams of 2.74 mole of potassium permanganate. Question number 11, nitrogen and carbon monoxide have the same number of the electrons, protons and neutrons. Question number 12, no individual neon atom in the sample of the element has a mass of 20.18 AMU, atomic mass unit. Question number 13, many chemical reactions taking place in our surroundings involve the limiting reactants. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ Al2C3 which can be prepared by the reaction of 20 gram of aluminium and 30 gram of sulfur. How much the non-limiting reactants is in excess? Question number 2, a mixture of the two liquids hydrazine N2H4 and N2O4 are used in rockets. They produce nitrogen and water vapors. How many grams of nitrogen gas will be formed by reacting 100 grams of N2H4 and 200 grams of N2O4? इसकी इक्वेशन है नेक्स्ट 2N24 2N2H4 प्लस N2O4, इसके आगे प्रोडक्ट है 3N2 प्लस 4 वाटर मालिक्यूल्स। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 2, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द सब्लिमेशन नेम एनी टू सब्लिमेट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ RF, write its formula. Question number 5, what is a chromatography, write its uses. Question number 6, differentiate between stationary and mobile phase. इसमें हमने डिफ्रेंशिएट करना है स्टेशनरी फेस में और मोबाइल फेस में। जैसा कि सेकंड चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, नेक्स्ट हम मूव करेंगे यूनिट नंबर 3 में। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ मीन बाय एब्सोल्यूट ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन एवोगाड्रोस लॉ एंड डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई द पायलट फील्स अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग एट हाई एल्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ प्लाज्मा, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, राइट इट्स यूजेस। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द फ्यूचर हॉरिजॉन्स। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द मेन postulates ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस।
क्वेश्चन नंबर 2 है एप्लीकेशंस ऑफ द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन बॉयज लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, वाई हाइड्रोजन फ्लोराइड इज वीकर एसिड देन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Question number 2, how sea life survive under frozen sea? Question number 3 है water and ethanol can mix in all proportion, give the reason. Question number 4, water is liquid at room temperature but hydrogen sulfide is a gas, give reason. इसमें आपने रीज़न लिखना है कि वाटर क्यों रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। इसके बरक्स अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो वो गैस होती है एट रूम टेम्परेचर। Question number 5, why the boiling point of the water is greater than the hydrogen fluoride? Question number 6, describe the types of the solids. Question number 6, describe the types of the solid. Question number 7, define symmetry and write its elements. Question number 8 है define with examples anisotropy, isomorphism, polymorphism, allotropy, transition temperature. Question number 9 है students, what is a crystal lattice and unit cell? Question number 10, why the electrical conductivity of metals decreases by increasing temperature. Question number 11, है why the amorphous solids like glass are also called the super cold liquids. Next long question है question number 1, what are the London forces? Describe the factors affecting London forces. Question number 2 है what is the hydrogen bonding? Explain its role in biological molecules. Question number 2, what is the hydrogen bonding? Explain its role in biological molecules. Question number 3 है what are the liquid crystals? Describe their composition and its uses. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 5, इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स? क्वेश्चन नंबर 2 है कंपेयर द फास्ट न्यूट्रॉन्स एंड स्लो न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है गिव द postulates ऑफ प्लैंक्स थ्योरी। Question number 7, energy differences between adjacent levels in an atom goes on decreasing sharply. Why? Question number 8 है what is the origin of the hydrogen spectrum? Question number 9 है what is the dual nature of matter? Question number 10, what is the Heisenberg's uncertainty principle? Write its mathematical form. तो स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी लिखना है और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 11, कंपेयर ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज एंड किनोड रेज। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द postulates and effects of Bohr's model. Question number 3, define the spectrum and describe its types. Question number 4 है compare the atomic emission spectrum with the atomic absorption spectrum. Question number 5 है describe the types of quantum number. Next students, question number 6 है explain the Millikan's oil drop experiment to determine the charge of an electron. Next students, unit number 6 है इसके short question. Question number 1, what is the octet rule? Why it is octet rule not involved in universal? Question number 2 है why are noble gases so stable? Question number 3 है differentiate between polar and non-polar covalent bond. Long question है इस चैप्टर के स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, define ionization energy, electron affinity and electronegativity. Write their factors variations in periodic table. Question number 2 है describe the postulates of Vesper theory, discuss the structure of methane and ammonia.
नेक्स्ट स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू define systems surroundings and state function exothermic and endothermic reactions internal energy and first ionization energy. First law of thermodynamics enthalpy of neutralization and combustion. Question number 2 है what is bond Haber cycle. Question number 3 what is the difference between heat and temperature. Long question is chapter के define describe the methods of measurement of enthalpy. Question number 2 है describe Hess's law of constant heat summation. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा स्टार्ट हो रहा है यूनिट नंबर 8. इसके शॉर्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 कंपेयर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस. क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज केसी. क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स डिफाइन pH and pOH. Write the pH of egg, milk, potato, rain and water. Question number 6. What are the optimum conditions for the synthesis of ammonia? Question number 7. Why is pure water bad conductor of electricity? Question number 8. Differentiate between Ka and Kb. Question number 9. Define common ion effect. Give the examples. Question number 10 has students what is a buffer solution? Why we need it? Define buffer capacity. Question number 11 है what is Henderson equations. Question number 12 है short questions के लिहाज से calculate the pH of 10 raised by 2 minus mole per decimeter cubic of HCl. Next is chapter के long question है students. Question number 1 define law of mass action, how the value of Kc is calculated. Question number 2 calculate the value of Kc for dissociation of PCl5 and N2O4. Question number 3 है describe the application of equilibrium constant. Question number 4 define Le Chatelier's principle. Discuss the effects of change in volume and temperature in ammonia formation. Next है question number 5 describe the application of equilibrium chemical equilibrium in industry. Next students unit number 9 है short questions. Question number 1 define solubility, solubility curves and describe its type. Question number 2 what are the abelioscopic constant and cryoscopic constant. Question number 3 है boiling points of solvents increases due to the presence of solute justified. Question number 4 है freezing point are depressed due to the presence of solute justified. Question number 5 in summer the antifreeze solutions protect the liquid of radiators from boiling. Question number 6 NaCl and KNO3 are used to lower the melting point of ice. Justify it. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 कंपेयर द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द थ्री डेफिनेशन ऑफ Raoult's law. Question number 3 what are the colligative properties? Explain elevation of boiling point and lowering of vapor pressure. नेक्स्ट स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 10 है इसके शॉर्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. Question number 2 define electrolysis, electric cell, electrolytic conduction, electrode potential, SHE. Question number 3 impure copper can be purified by electrolytic process and why. Question number 4 a salt brick maintains the electrical neutrality in the cell, why. Question number 5 has students the standard oxidation potential of zinc is plus 0.76 volt and its reduction potential is minus 0.76 volt. Explain with the reason. Question number 6 है SHE acts as an anode when connected with the Cu copper electrolyte but as a cathode when zinc electrolyte, why.
नेक्स्ट स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर. क्वेश्चन नंबर 2 है बैलेंस ऑफ इक्वेशन बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड ion electron methods. Question number 3, what is the electrochemical series and describe its applications. Next students, last chapter है chemistry book का. यूनिट नंबर 11 है. शॉर्ट क्वेश्चन इसके. क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट, स्पेसिफिक रेट, कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड, रेट, डिटरमाइनिंग स्टेप, एक्टिवेशन एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ अर्हीनियस इक्वेशन. इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. तो स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो यहीं तक है. अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें. अगर आपको पसंद आई है इसको शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को देखें और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.